Hi everyone, how are you? Okay, dears, welcome to our RANA SIR educational channel. Today, I will talk on a topic whose name is vector analysis. But in this topic, I will explain on this topic. I will explain about vector analysis. In this topic, I will explain how triangle sum of vector addition is done. So this is very important topic. Therefore, you concentrate on this topic from starting to end to understand its concept, that is triangle law of vector addition. So here I will explain this topic in detail. So you concentrate on this topic from starting to end to develop good knowledge on this topic. Okay. Therefore, simultaneously you also like this live video and then share this live video with your colleagues and students so that they can also update their knowledge on this topic. And simultaneously you also subscribe this educational channel more and more for getting such type of concept in detail. Students, you concentrate clearly on this topic, and one additional information I am also going to tell you, you follow it positively, that will enhance your knowledge further. Therefore, you have to take one notebook and one pen, and then you have to see at your location properly and positively, and you have to also write all informations which will be written by me on the blackboard, and also you write those informations which are understood by me. Okay, so in vector analysis, next topic I will explain it in detail, that is very important. So you concentrate on this topic in detail. Okay student, so I am going to explain that topic is of vector addition. Vector addition, triangle law of vector addition. This is very important topic. It is also written in Hindi, that is सदिश योग का त्रिभुज नियम. सदिश योग का त्रिभुज नियम. त्रिभुज नियम. You have to write here its Hindi meaning also. Okay, so this topic is of class 11 physics, and that is also free online coaching classes, and you take its advantage in detail. Okay student, so in vector analysis, this is the chapter number 3, and in this chapter I am explaining real concept of triangle law of vector addition. What is its concept? Because here I will use two methods. One is the geometrical method, and other I will also use analytical method for adding two vectors. And if two vectors will be given in 3D, so how we will get its results? So that information I will also explain here. Okay. So here triangle law of vector addition, that is its meaning is also written. Vector means sadish, addition means yog, of means ka, triangle law, त्रिभुज नियम. सदिशों सदिश योग का
Tribhuj name. We have to explain this concept in detail. Okay. So first of all, I will consider one vector, and I will say this vector is P. This vector is P, and other vector I am considering Q. I am considering here Q. Now we have to take addition of these two vectors. So I will draw a vector which is parallel to P, and then I will draw a vector which is intersecting this vector. So this vector I will say Q, and then I will extend the vector P along this. So I will say this vector is along the x-axis. So from the x-axis, this angle will be theta. Okay. Now the sum of vector P and Q, that will be the vector R. So I will say I will take tail of this vector P, and it will meet at the vector Q. So this vector will be R. So by using the concept of triangle law of vector addition, so in the graphical method I will say the vector R. This is the vector R. So vector R I can write vector R which is equal to vector P plus vector Q. This is the required concept, and this concept I know, that is the geometrical method, because in the plane here I am considering a vector which is available. This is the position vector, and here position vector I am going to say O. Now from O to P, that is a vector whose name is P, and also Q is a vector that is intersecting the vector Q, but from the positive x-axis it is making a angle theta. Now the sum of these two vectors, that will be the R. So vector R which is equal to vector P plus vector Q. So this concept is given by geometrical method. GEOMETRICAL geometrical method. This is known as geometrical method. So in Hindi that is written geometry method. Geometry method means B. So it is written as geometry, and in English that is also called geometrical method. So this is very easy. We have to take sum of two vector easily. If one vector I will say that is P, and other vector that is Q, which is intersecting at a point, any point on the vector P. So I will say the sum of vector P plus sum of the vector P and Q, that will be vector R. Therefore I can write vector R which is equal to vector P plus vector Q. So this concept is given with the help of geometrical method. So this is very easy to calculate. If two vector will be given, it means that two position vector will be given. So we can also get the resultant vector. So R is also known as a resultant vector, because one vector is P and other vector is Q. When we will take the sum of these two vectors, so I will get a vector, and that vector will be resultant vector. Okay. So all the information I will write in the systematic way. So each and every students who are reading in CBSE board, they are in English medium. Those students can also understand the information in detail, in English in detail. Okay. Now this information I will also explain in Hindi, so students who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can also understand it easily. Okay. यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभुज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर को हम सदिश कहते हैं, एडिशन का योग होता है, का का मीनिंग होता है ऑफ, लाख मतलब नियम होता है ट्रायंगल में त्रिभुज. तो ये सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम कहा गया है कि अगर एक वेक्टर होता है इस तरीके से दिया गया है कि इस तरीके से दिया गया है, जब P को एक्सटेंड करेंगे तो Q को इंटरसेक्ट करेगा. तो मैंने P को एक वेक्टर ड्रॉ किया, इस पर Q को इंटरसेक्ट करा है, इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड, इसका भी डायरेक्शन फॉरवर्ड. जब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा. रिजल्टेंट का हिंदी होता है परिणाम.
तो वो परिणामी वेक्टर होता है, वो परिणामी वेक्टर बराबर होगा वेक्टर p प्लस वेक्टर q के। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं वेक्टर, अगर दो वेक्टर दिया गया तो दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो इस मेथड को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, इसको हिंदी में ज्यामितीय विधि के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दीज कंसेप्ट्स आर वेरी इजी, so you concentrate on it because some numericals can be also given on this topic, because if vector p value will be given, vector q value will be also given, so we have to get vector r, and after getting the vector r we have to get the magnitude of the resultant vector, so that can be also obtained easily, because before I have explained in the case of displacement vector I have taken two position vector and then I have got the value of the displacement vector, and then I have also calculated the resultant of the displacement vector, and then any particle which is moving from point A to B, I have also calculated what will be the distance between 2 points, a body which is moving from point A to B. So that speed I have also calculated. That will be the distance divided by time. So distance I have to calculate with the help of magnitude of the resultant vector, and then we will also divide when that particle is moving from point to other. So that time I will use, and after using I will divide distance by time, that will give a value, and that value will be the speed of that object or that particle, okay, which is moving from point one to another. Okay, so resultant vector is very important. Okay, how to get the resultant of the given vector and what will be the magnitude, that will be also important. Okay, so this information I will explain in systematic way, that is in a system, and then after explaining in the system, that is in systematic way, then I will also explain another method, that is analytical method, to find the resultant vector, and also I will find the angle, because here if line P I have extended and vector Q is intersecting at a point, so from the positive x-axis it is making angle theta, so I will get this value, and also I will draw a line from that point to this line, so I will get this value. So I will use here Pythagoras theorem to get this angle and also the resultant vector. So that method is also called analytical method, that is also known as analytical method. So that method I will use to find also this phi angle and when theta angle will be given. So this formula is also important, and this formula is also important. This is for the geometrical method, and this will be for analytical method. So both methods are important for a triangle. In a triangle, law of vectors addition, if more than one vector, that is two vector will be available. So how we will get the resultant vector, that is परिणामी vector. Okay, so I am going to erase this one, and after erasing I will write systematic definition, and then I will explain this information, and after explaining this information I will also translate this information into Hindi, so each and every student can understand in detail. Okay, and also I will translate this information in Hindi, so students who are reading in Hindi medium, those students can also understand these concept in detail. Okay student, so for further I am going to erase this, and after erasing I will write its systematic definition. Here I am going to write, if two vectors are available in the same plane, and both vectors are added, and then we get, and
then we get the resultant vector. The resultant vector. So that is our requirement. Resultant vector. By geometrical method I am explaining it. By geometrical method I'm explaining it detail. By geometrical method I am explaining it in detail. Details. So this is the information. So below information I will explain, because in the same plane I will take two vectors and both vector will be such that we have to take its resultant vector. So these are the information. Okay. So this information I will explain in Hindi. So students who are reading in Hindi medium, those students can also understand this concept in detail, because यहाँ पर मैंने दो वेक्टर दिया है, दोनों वेक्टर जो होता है एक ही प्लेन में है, लेकिन एक वेक्टर जो होता है दूसरे वेक्टर को इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करने के बाद से उसका हम परिणामी वेक्टर पाएंगे। वो परिणामी वेक्टर ही जो होता है उस दोनों वेक्टर का समेशन होगा। समेशन मतलब जोड़ होगा। ओके। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने लैंग्वेज में लिखा है। इसी इंफॉर्मेशन को तो होता है यहाँ पे लिखा गया बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। इसको हम वेरो इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए टेबल डेटा को इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से हम एक ही प्लेन में दो वेक्टर लेंगे। अब दोनों वेक्टर को लेने के बाद से उसको सम करेंगे। सम का मतलब दोनों वेक्टर का जोड़ करेंगे। जोड़ करने के बाद से जो हमें मिलेगा वह हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। लेकिन वो किस मेथड के द्वारा, वो मेथड यहाँ पर हमने लिखा है ज्योमेट्रिकल मेथड। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेथड है। इस ज्योमेट्रिकल मेथड ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। इस ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज करके हम दोनों वेक्टर का सम निकाल सकते हैं या निकालेंगे। और दूसरा कंसेप्ट इसका यह है कि अगर वेक्टर जो होता है P और वेक्टर Q है, उसके साथ का जो एंगल बनता है वह एंगल थीटा है। लेकिन जब वेक्टर जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर को निकालते हैं, वहाँ पर एंगल जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फाई होता है। तो वह फाई कितना होगा उसको भी कैलकुलेट करेंगे। और उसको कैलकुलेट करने के साथ साथ हम रिजल्टेंट वेक्टर को भी कैलकुलेट करेंगे। यह कंसेप्ट जो होता है एनालिटिकल मेथड होता है। एनालिटिकल मेथड से जो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होंगे? दो मेथड। एक मेथड जो होता है ज्योमेट्रिकल मेथड होता है और दूसरा मेथड जो होता है एनालिटिकल मेथड होता है। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू नो दिस कंसेप्ट इन डिटेल। ओके। There are two methods are available to sum the given vector, that is vector A and B। हम इसमें जो होता है एक वेक्टर को इस तरीके से लिए, इस वेक्टर का नाम हमने P का। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ड्रॉ बोल्ड P से भी लिखेंगे, बोल्ड P से लिखेंगे या स्मॉल P लिखेंगे, P लिखेंगे लाइट P लिखेंगे, उस पर एरो देंगे। तो वेक्टर को यह भी लिखने का तरीका है और ये भी लिखने का तरीका है। तो हम दोनों को इसी को कंसीडर करेंगे। हम एरो लगाकर वेक्टर को लिखेंगे। एक वेक्टर जो होता है Q जो होता है इस तरीके से है, Q वेक्टर जो होता है इस तरीके से है। अब इस दोनों वेक्टर को हमको एडिशन करना है। तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इस वेक्टर को ड्रॉ किया, एक वेक्टर P हो गया। सपोज कि ये वेक्टर को जब P को बढ़ाएंगे तो किसी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेगा, इसको बढ़ा रहे पे इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरीके से वेक्टर Q को हमने ड्रॉ किया जो P को इंटरसेक्ट किया किसी भी को। तो इसका रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो इस वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। इस वेक्टर को हम R के नाम से जानते हैं। तो जो एक वेक्टर P है वो
एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल क्या बनाता है, थीटा बनाता है। और यहाँ से एक पोजीशन, जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है वो एंगल फाई बनाया। तो वेक्टर आर जो होता है, वेक्टर आर जो होता है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू के बराबर, तो वेक्टर पी आर प्लस वेक्टर क्यू होता है। इस मेथड को जो होता है हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। इस मेथड को हम प्रॉपर्ली यूज करते हैं। दिस इज द सेकेंड फर्स्ट मेथड दैट इज ज्योमेट्रिकल मेथड, इसको ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। तो वेक्टर के एडिशन को दो मेथड से हम जनरेट करते हैं, दो मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। पहले मेथड को ज्योमेट्रिकल मेथड होता है कि वो एक वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर p, और दोनों को सम करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का नाम जो होता है हम r कहेंगे। r से स्टार्ट होता है रिजल्टेंट, वो वेक्टर जो होता है रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब दो वेक्टर का सम है। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट किए कि यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा है, लेकिन जब हम एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे तो इस थीटा के वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस थीटा के वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द concept which are available in the case of geometrical method, because here one vector is available, that is p, when I have extended. So vector p and vector q both are intersecting at a certain point. Now here this figure I have drawn here. Now from this axis I am considering angle theta, and when I will take its resultant vector, so that resultant vector is r. So this angle between vector p and vector r, angle will be phi. So resultant vector will be such as vector r, which is equal to vector p plus vector q. So this is the required information regarding triangle law of vector addition, because triangle law of vector addition there are two types, and both types we have to know in detail, because if student will understand it, so any question if student will get, so already those student will solve the numericals very easily. Okay, some questions which will be asked in the competitive exam, so those questions can be solved with the help of this method. There are two methods. One is the geometrical method, already I have told you, but after it I will explain analytical method. That is also important. That is important because if student will say you find the angle is phi, so how will you find? So you have to apply Pythagoras theorem. So this is the theta, along this I will say that is perpendicular, and other angle from the 90 degree angle, that from that 90 degree I will get a side, that side will be hypotenuse, and remaining side I will say base. So tan theta, which is equal to perpendicular divided by base. So according to that concept I will get phi angle. Okay, this is the required concept, and this concept I will use to get phi angle and also theta angle. Okay, so in analytical method I will use here for getting the triangle law of vector addition. That is second concept I will use. Okay student, if you are understanding this concept very easy, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also improve, means update and develop their knowledge on this topic. Okay, next topic is very important. Okay, you also share, subscribe this educational channel, that is channel name is RANA SIR UP KUSHINAGAR. Okay, you follow it positively, and you follow and also you share this live video. Okay, now next topic of vector addition I will explain. Okay, so geometrical method I know each and every students are doing very easy. Okay student, so student who are reading in English medium or Hindi medium, both students can understand geometrical method. That is very easy, because you have to take one vector and another vector, both vector will intersect at a point, that is प्रतिच्छेद, वो दोनों वेक्टर जो होता है प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। तो इसको जो होता है एक एक्स वाई प्लेन में हमने एक दर्शा दिया है कि दोनों वेक्टर जो होता है इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पर। अब
इस यह वेक्टर जो होता है एक्स एक्सिस के एलॉन्ग है, तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल बना रहे हैं। तो वेक्टर इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है। उस वेक्टर को हम आर से लिखते हैं। आर वेक्टर को मीनिंग होता है रिजल्टेंट वेक्टर, माने परिणामी वेक्टर। तो इस तरीके से दो वेक्टर दिया जाएगा तो दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। अगर सबस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो दो वेक्टर का सबस्ट्रक्शन, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, उस केस में मिलकर सबस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब हम एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे और दो वेक्टर का एडिशन करके हम दिखाएंगे कि किस तरीके से दो वेक्टर का एडिशन होता है। और उसके साथ साथ जो होता है न्यूमेरिकल, इस जो फार्मूला आ रहा है, इस फार्मूले पर किस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, अगर किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप करेंगे, लिखेंगे और लिखने के बाद से जो होता है आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यू हैव टू फॉलो दिस इन कंसेप्ट वेरी ईजिली एंड ऑल्सो प्रॉपरली। ओके, तो इस डाटा को हम इरेज करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है इसका सेकेंड कंसेप्ट है दैट इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से जो होता है दो वेक्टर का सम को हम प्रूव करके शो करेंगे। ओके, सो पॉजिटिवली आई एम गोइंग टू इरेज दिस टॉपिक एंड आफ्टर इरेजिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सेकेंड मेथड आई हैव टू यूज दैट इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड्स, एनालिटिकल मेथड। इस एनालिटिकल मेथड से जो होता है दो वेक्टर का हम एडिशन करेंगे। सपोज कि एक वेक्टर जो होता है ऐसे पी दिया गया है, इसका डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, या तो बोल्ड पी लिखेंगे तब पर भी आप समझेंगे कि वो वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे है। एक दूसरा वेक्टर क्यू है जो इस तरीके से, इसका डायरेक्शन इधर है। ओके, तो हमने ज्योमेट्रिकल मेथड से हम दो वेक्टर का ऐड करके आपको बता दिए थे, लेकिन हम इस दोनों वेक्टर को किस मेथड से सॉल्व करना, किस मेथड से ऐड करना, एनालिटिकल मेथड से ऐड करना। इस तरीके से हम एक वेक्टर पी को मैंने ड्रॉ किया, इस वेक्टर को हमने पी कहा और पी वेक्टर को मैंने लिखा। नाउ हम इस वेक्टर जब पी वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे तो क्यू वेक्टर को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब दोनों को एक पॉइंट पर कट करेगा। कट को जो है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, तो हमने एक प्रतिच्छेद बिंदु बनाएंगे। सपोज कीजिए यह जो होता है वेक्टर जो होता है इस तरीके से, वेक्टर जो होता है क्यू जो होता है, वेक्टर क्यू जो होता है इस तरीके से किसी पॉइंट पर वेक्टर क्यू पी के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये वेक्टर हमारा क्या होगा, वेक्टर क्यू हो गया। ओके, तो हम इस लाइन को और एक्सटेंड करें तो इस केस में जो होता है हम एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे, और उस रिजल्टेंट वेक्टर को आर से लिखेंगे। तो अब इसमें जो होता है हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमेशा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किया जाता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री अवस्थित होता है, उस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से इस पॉइंट से जो होता है हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वेक्टर पी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कि इस पॉइंट को हमने ओरिजिन लिया है और इस पॉइंट को हमने जहाँ पर परपेंडिकुलर डायन है और इस पॉइंट को जो होता है सपोज ये एस है, जो वेक्टर लिया गया है उस वेक्टर के नाम के अलावा हम पॉइंट के नाम को लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन न हो सके। इसलिए हम इस ट्रायंगल ओ एन एस एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग होता है समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज के अलावा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान में ये देना है कि जो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने वाली की जो साइड होता है उस साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज करते हैं, इसको हाइपोटेनस करते हैं। इस यह जो होता है एच से स्टार्ट होता है, इसलिए शॉर्टकट में एच लिखेंगे। ओके, और जो यहाँ पर फाइव होता है, फाइव एंगल होता है, इस फाइव एंगल के सामने के, ये फाइव एंगल के सामने के जो भी साइड होता है उस साइड को जो होता है हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए इसको यहाँ पर ओवरलैप न हो, इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। तो ये फाइव के सामने जो साइड होता है उस साइड का नाम जो होता है हम परपेंडिकुलर कहते हैं।
और ER B परपेंडिकुलर CU दिया गया, इसको परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर जो होता है P से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हम P स्मॉल p लिखते हैं। और जो साइड बचता है उस साइड को हम बेस करते हैं, जो ON साइड है वो से M तक, वो साइड को हम क्या कहते हैं, P कहेंगे, वो बेस कहेंगे, उस साइड को हम बेस करेंगे। और इस एंगल जो वेक्टर P और S के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो ट्रायंगल बनाया गया, ये डायग्राम बनाया गया, इसको प्रॉपर्ली आपको समझना होगा, क्योंकि हम वेक्टर P को ड्रॉ किए हैं, वेक्टर Q ड्रॉ किए हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर R लिया है, लेकिन इस ट्रायंगल में जो होता है हमको यूज करना है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में जो होता है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होता है कि एक ट्रायंगल बनाना, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इसलिए पॉइंट S से जो वेक्टर P पे जो परपेंडिकुलर डाले, और जो वो परपेंडिकुलर लाइन आया है वेक्टर P को इंटरसेक्ट किया, मतलब प्रतिच्छेद किया है, उस पॉइंट को S कहे, और जहाँ से परपेंडिकुलर डाले उस पॉइंट को S कहे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ये ONS या एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद इस वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का सम हम निकाल सकते हैं। इसलिए हमको वेक्टर P जो एक प्रतिच्छेद हुआ है, रियल लेंथ कितना है हमने P माना है, लेकिन हमको अगर ये हमने P माना है, इसलिए ये तो P होगा, लेकिन हमको ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना होगा। ये डिस्टेंस सपोज कि यह पॉइंट A है, AN डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और AN डिस्टेंस कैलकुलेट करने के साथ साथ S भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए उसके बाद से इस लेंथ और इस लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारा बेस बनेगा। उसी तरीके से जो होता है हमको S लेंथ मिलेगा, और S लेंथ मिलने के बाद इस लेंथ पे OS लेंथ को हाइपोटेन्यूज के नाम से जानेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं, और जो फाई एंगल है, इस एंगल के सामने जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर, दैट इज हिंदी में लंब के नाम से जानते हैं, और हाइपोटेन्यूज को कर्ण करते हैं। और इसके साथ इसके अलावा जो साइड बचता है उस साइड को आधार, दैट इज बेस के नाम से जानते हैं। बेस जो होता है B से स्टार्ट होता है, इसलिए ON को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इसके बाद से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद से हम रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है उसको हम एनालिटिकल मेथड के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इस मेथड पर ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं, और जो यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी जो होता है इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे। दैट ऑल इंफॉर्मेशन आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ NCERT मेथड, NCERT पैटर्न। सो ऑल concept I will explain clearly because NCERT pattern is not repeat any concept again and again. Okay, so each and every information I will explain with the help of NCERT pattern. Okay, so you follow it properly and safely and positively. Okay, so एनालिटिकल मेथड को यूज करके हम रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई है, इसको इरेज करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मेन कंसेप्ट होता है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूज को H से लिखते हैं, H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर बेस ON स्क्वायर, अब प्लस जो होता है लंब मीन्स परपेंडिकुलर S स्क्वायर, यहाँ से हम यूज करते हैं। यह जो होता है पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। H का मीनिंग होता है OS, यहाँ आप लिखेंगे
OS स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे बेस। बेस का मतलब होता है OP प्लस AN होल स्क्वायर प्लस T का वैल्यू होता है NS स्क्वायर, NS स्क्वायर। So we have to get the value of AN and also NS because OP is also available vector P, but value of AN I have to get and also value of NS I have to get. Okay, so I will use is another triangle, yes, AN. This is also right angle triangle. So I will get this length and also this length because here Q is available. This is the vector Q. Okay, so this is the required concept. Properly you write in your notebook because here no space for all information I cannot show at a time. So one by one you write. Okay, so after this I will get the value of OS. The value of OS is already written vector R. So we have to get the value of AN and also NS, and then I will use in this equation. So I am going to say this is the equation number 1. Okay, so positively I will follow it and I will get the value of AN and also NS. Okay, in the triangle ANS, in the triangle ANS. Okay, so every information I am going to erase and then I will write information. That is, here I can write cos theta which is equal to in the triangle ANS. So cos theta is equal to base divided by hypotenuse. So base will be AN divided by hypotenuse AS. So AN, so we have to get the value of AN. So imply that I can write AN which is equal to AS cos theta. Okay, so value of AS, that is the vector Q. So I can write in the place of AS, here imply that AN which is equal to vector Q into cos theta. So I have got the value of AN, which is equal to vector Q cos theta. Similarly I will get the value of NS. Okay, so this value I am going to say because further I will use it. So here I am saving because after writing I will use its value vector Q cos theta. Okay, because there is no space, therefore I have saved this value for further using. So now I will also get the length of NS. So here I will use sin theta in same triangle. Triangle name is ANS. So sin theta which is equal to perpendicular means NS divided by hypotenuse, that is AS. So here I can also write NS which is equal to AS into sin theta. So value of AS is vector Q. So imply that I will write NS which is equal to vector Q into sin theta. So this value I have written. Now NS value and AN value I will substitute in the equation number first, and also I will write the vector OP. Vector OP is P. So all these value 1, 2, 3, this value I will put in the equation number 1 from here and there and also from the figure. So after putting I will get a equation, that equation will be 2, and after simplify I will get the value of R. That is, in the place of OS I can also write vector R. So this is the vector, here vector sign is written vector R.
This is the vector R. Okay, so I will get the resultant vector. So that is the required concept. With the help of that concept, I will get the information will be available in the form of theta. So that concept is used here, analytical method for getting the resultant vector of two given vector. Okay, so that is also triangle law of vector addition. So triangle of vector addition, there are two types. One is the geometrical method and other is the analytical method. So both method we have to use properly. Now I will write one statement. That statement will be as, so that is statement I will write, putting the values of OS, OP, comma, AN and ENS in equation 1 we get. So I have written here one statement, and that statement I will follow positively, and I will take each value, and those value I will substitute in the equation number 1, and then I will get the required information, and after simplification of that required information I will get the value of the resultant vector by using the analytical method. Okay, so I am going to erase this topic, and after erasing I will substitute this with OS. So from the figure OS is R. So here I will write vector R, and here is square is available, so I will put here square. Now here OP is vector P. So I will write here vector P. I here vector P and plus AN. The value of AN is theta cos Q plus theta, vector Q plus vector Q into theta, and I have written here square, so I will put here square, and then again I will write plus sign is available. So value of AN I will substitute AN, yes, which is equal to vector Q sin theta. Its value I have written here, and it has square, so I will put here square. Okay, so value of OS, OP, ENS, AN and ENS I have written from this figure and also from the data, and after writing I will simplify it for getting its value. So here I will say vector R square whole square, which is equal to, this is A plus B whole square. So I will use here formula A plus B whole square, which is equal to A square plus B square plus 2AB. That concept I will use, and after using I will simplify. After simplify I will get its resultant vector. So here I will say that is A square plus B square plus 2AB plus 2AB. So here I will write vector P square, vector Q square, sin square theta, and then plus 2AB. A means vector Q into cos theta. So this information I write, and then here Q square sin square theta is also available, so that term I will write here vector Q square into sin square theta. Okay, so I have written here. So vector R square, which is equal to vector P square plus vector Q square sin square theta plus 2PQ cos theta plus Q square into sin theta. So Q square I will take common from this two term, and also from this term. After taking common, so I will get in the bracket here cos square theta, here cos is available. So here I will put
cos square theta. So here q square theta I will take common, so here it will be cos square theta plus sin square theta. So mathematical, this is the mathematical identity and its value will be 1. So cos square theta plus sin square theta which is equal to 1. So this concept I will use, and after using I will simplify its value. So positively you concentrate on this topic. So resultant vector I will get with the help of analytical method. So I will use analytical method, so I will get the resultant vector and also use the tan theta for getting the angle. So that is also important. Okay. So further I am going to simplify. After simplifying I will write its result. Okay. So here I am erasing this one, and after erasing I will write its appropriate meaning. So its appropriate word will be as. So you consider, because this topic is very important, because some question in the competitive exam also can be asked. So here p square I will write vector p square. Okay. So here in this two term cos square theta plus sin square theta, cos is here theta that is vector q square into cos square theta, q square into sin square theta. So I will take q square comma, vector q square comma, in the bracket here I will write cos square theta, and here will be sin square theta. So I will put here sin square theta. Okay. So here in the bracket 2 vector p into vector q and cos theta. So this information I will write when I will simplify this identity. So I will get this one. Okay. So positively I am going to erase this one, and after erasing I will say, so each and every students are knowing cos square theta plus sin square theta, its value will be 1. This is the identity, this is the trigonometrical identity, and we have to remember it. In the place of cos square theta plus sin square theta we have to put 1. I can also prove from 1 to sin square theta plus cos square theta and cos square theta plus sin square theta. So in the place of cos square theta plus sin square theta I will use this identity. I can put here 1. So in the next step I will use this formula for simplifying. So here I will write vector p square plus vector q square, vector q square plus 2, vector q square, and in this place I will put 1, and plus 2 vector p vector q into cos theta. So here I will write vector p into vector q into cos theta. Okay. So after simplifying in the left hand side I can write vector r whole square. Okay. This is the resultant vector. Now further I will also simplify. After simplify in particular way I will write what will be its formula, and that formula is very important. It angle and also two vectors and angle will be given there. So we can use this formula for getting the resultant vector. Okay. So above term I will erase, and after erasing I will simplify below term. So here I will write vector r square which is equal to vector p square plus here vector q square into 1, that will be vector q square plus here I can write 2 vector p into vector q into cos theta. Okay. This is the expression, and we have to remember it. Now here square is available, it will go in the right hand side, it will be 1/2, and 1/2 is written as a root. So square root. So that square root I will use. So this 2 I will put there, 2 I will write square root, and I will write all terms which are available on the right hand side. So vector p square plus vector q square plus 2 vector p into vector q, and then I will put here cos theta. So this is the resultant vector of 2 given vector.
of two given vectors. So if two vectors will be given and angle will be given, so I will use this formula for getting the resultant vector. So this is the concept, and this concept I have got with the help of analytical method. Because in the triangle law of vector addition there are two methods. One method is the geometrical method, that is very simple, because vector p plus vector q which is equal to vector r, that is the resultant vector. But here I have used analytical method. In the analytical method I have used the right angle triangle, and with the help of right angle triangle I have got resultant vector, and that resultant vector is written as vector p whole square plus vector q whole square plus 2 vector 2 into vector p into vector q into cos theta. Okay, and this is the square. So this is the required concept for getting resultant vector when theta value is given. Okay, between p and q, because two vector is intersecting, so one angle will be given. So I will use this formula for getting the addition of two vector. Okay, so this is the resultant vector. So this resultant vector r I have got. Now I have also find the value of this theta, this phi. So each and every students are knowing this is the slope, and slope is written as theta which is equal to tan inverse m. In other words, we can say that m is equal to tan theta. So tan theta which is equal to, that is applied in the right angle triangle, and in the right angle triangle tan theta which is equal to perpendicular divided by base. So value of perpendicular I have already written here. Before I have written there this vector q sin theta, and this will be vector q cos theta. So I can write also that information. So here I am going to erase, and after erasing I will also write what is the angle from point O between these two vectors. One vector is p and other vector is resultant vector. So that angle can be obtained tan phi which is equal to perpendicular or perpendicular divided by base. Perpendicular divided by base. So here I can write perpendicular each n yes. Perpendicular will be n yes, and base will be o n. Base will be o n. Now here I am writing its value. If you are understanding very well, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic. Okay, this is very important, and you also subscribe this educational channel more and more. Okay students, so this is very important, because tan theta always used in right angle triangle, and in right angle triangle that will be perpendicular divided by base. Perpendicular will be n s and base will be o n. Now here n s, the value of n s already I have got vector q sin theta, but the o n which will be o a plus a n. I will write here a n. So value of a n I have already calculated, because that will be q cos theta, but length OA, that will be vector p. Okay, so further I can write also. So this is the important formula, you have to remember it positively. Okay, and this formula can be obtained, will be obtained from the analytical method of taking law of vector addition. So tan theta tan phi I can write here, tan phi which is equal to vector q sin theta divided by here OA, this is OA, each P. So here I have to write vector P, and plus is available here, so I will put here plus 9, and we have to write length AN. So length AN I have calculated already, that is 2 cos theta. So here I write vector Q cos theta.
So with the help of analytical method, I have got two concepts. One concept is this one, and other concept is this one. So these two concepts we have to know to get the angle between vector P and vector R, and also what will be the resulting vector if two vectors will be given. So by if theta is also given, so I will use this method to get the resultant vector, and this method I will use to get the angle between vector P and vector R. If angle will be not given and we have to find the vector sum of the vector, so resultant vector will be vector P plus vector Q. Before I have used geometrical method. With the help of geometrical method, I will calculate information of resultant vector. So this is very important, and you have to remember these two formula. Okay. So these two formula I have derived. I have derived these two formula with the help of analytical method. So with the help of analytical method, when two vector will be given, so I have got the resultant vector and also the angle between a vector and also resultant vector. Okay, so these two information you have to remember properly, because some question can be asked on this topic. If you will know formula, so easily you will give the answer. If you will not have the formula, so you will solve, and after solving all steps you will follow, and then you will get the result. So there is need to save time, so you have to remember formula. Okay, if you have any doubt, so you ask your doubt, your comment, or any query which is related to this topic, which are related to this topic, and positively I will see, and then I will reply the solution of your comment in detail. Okay student, now in next class I will also give some example, that is some numericals I will solve, so your concept, your mind concept will be clear how this formula and this formula is applied when any numerical will be given. So in that numerical, how we will get the resultant vector and how we will get the phi angle. So those information I will calculate and I will show. Okay. Therefore, today I have explained this topic. Now further I will give its numerical. I will solve some numericals on this topic, so your mind will accept this formula easily. Okay, and concept will be also clear, because this diagram is very important. Because if you will understand this diagram, so your trigonometry and book will be clear. Okay, concept of trigonometry will be clear, because there are 6 trigonometrical ratios. So all trigonometrical ratios are defined, explained with the help of right angle triangle. So all concept of right angle triangle I have already used, because sin, tan, sin theta, cos theta, and tan theta, rest 3 trigonometrical ratios are the reciprocal. So all concept I have used here properly. So you have to imagine each and every point clearly, so you will get good knowledge from this topic. Okay, so positively I am going to terminate communication with you. If you have any doubt or query, so you ask your query in the comment section, and then positively I will look, and then I will give the positively solution to you. Okay student, so always I will meet with you on the same time, that is 30 minutes past to 7 o'clock to 30 minutes past to 8 o'clock. Okay, now this is very important topic, and you have to positively follow. If any student who missed this class, any topic, so those students need to go in my playlist section, and there I have already organized all data properly. That is class 12 mathematics, class 12 physics, and also class 10 mathematics, class 10 physics, class 11 mathematics, and class 11 physics are also available there. Okay, so you can read. All informations are available separately. Some informations are already available in English medium and also in Hindi medium. So properly according to your requirement, you go there and you read. All informations are available free online teaching process. So you follow properly, positively to take advantage from this free online
Okay, so thank you for meeting. Thank you for meeting with me. Thank you for giving your important time for learning all getting each and every information. Okay, now next time I will meet with you on the same time. Thank you for watching. Jai Hind, Rana Sir.